All right, myself Kumar Saurabh. Today I am present in front of you with yet another passage for your critical reasoning section. Of course, solving these type of passages is going to help you a lot in your law entrance examination, especially an exam like CLAT. So, of course, you know how we operate here. First of all, we are going to discuss the passage that is at hand, and then we are going to solve the questions which are based on it. So, without wasting any more time, let's just get started. Okay, the Indian upper class, like royalty, is sexually transmitted. Now, it is a very bold statement to say, and it is quite out of the box as well. It says that Indian upper class, like royalty, is sexually transmitted. Politics, business, mainstream cinema, and other occupations where talent is subordinate to lineage. Very important point. In all of these sectors, talent is subordinate to lineage, is what is being said. Are dominated by family cartels who plant their own over the rest. तो ये तो आपने काफी सुना होगा. आई एम श्योर बॉलीवुड का एग्जाम्पल लोग हमेशा देते हैं कि वहां पे वंशवाद चलता है. बॉलीवुड है, पॉलिटिक्स है, बिजनेसेस में भी ये चीज होता है. ऑफ कोर्स then the Indian elite is a system where there is 100% reservation for its own genetic material. Quite easy to understand. And the most underrated joke in this country is when this class joins the middle class in lamenting reservations for the poorest Indians from the backward castes in colleges and jobs. अब यहाँ पे एक नया कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश हुई है. पहले ऑथर ने क्या किया, पहले ये बताया गया कि कैसे देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन विच टैलेंट इज ऑलवेज सबऑर्डिनेटेड टू लिनिएज. बट जब लैमेंट करने की बात आती है, जब रोने धोने की बात आती है, जब शिकायतें करने की बात आती है, तो वो सारा का सारा सेक्टर यूनाइट होके एक रिजर्वेशन जैसी चीज का विरोध करता है, उस पर लैमेंट करता है, उसको सपोर्ट नहीं देता, ये बोल के कि यहां पे अनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है. नॉट अनजस्टिस, अनजस्टिस इज नॉट अ थिंग, इनजस्टिस हो रहा है. देन द अर्बन मिडिल क्लास टू is a beneficiary of generous and tenacious Indian family, which subsidizes its children far longer and deeper than it's generally accepted. अब ये तो सोसाइटल नॉर्म है. यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो भी जाते हैं, फिर भी वो फैमिली के साथ रहते हैं और बहुत लोग डिपेंडेंट होते हैं फैमिली पे. देन ओनली a young Indian who is not supported by a family purse will appreciate the simple fact that he or she does not compete with other young people for a shot at a decent life but with whole family. सही है, ये भी whole family सही बात है. अब जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनी फैमिली से, उनको ये सिचुएशन, ये सीन ज्यादा बेहतर से समझ आता है. द इंडियन इज लेस एन इंडिविजुअल एंड मोर द मैस्कॉट ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड. ऑफ कोर्स इंडिविजुअलिटी हमारे इंडियन सोसाइटी में थोड़ा कम है, और कहीं ना कहीं हम लोग एक सिंबल होते हैं, एक मैस्कट होते हैं अपने फैमिली के, फैमिली बैकग्राउंड. Much the way Rahul Gandhi is the mascot of Gandhi dynasty. Self-explanatory example है. Across the nation, with few exceptions, political parties are family businesses that children who have returned from foreign universities wait to inherit. In mainstream Hindi cinema, all the top actors cast in lead roles, barring one, are sons of फॉर्मर फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स. बहुत हो हल्ला होता है इस चीज पे. एज इज द केस विद सेवरल लीड एक्ट्रेसेस एंड डायरेक्टर्स, thousands of young people who flock to Mumbai to make it big have almost no chance of making it to the very top. अब अगर आप थोड़े भी अवेयर हो अपने सोसाइटल सिचुएशन के और थोड़ा भी न्यूज वगैरह देखते हो, ये पूरा का पूरा पैसेज आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू most weakens the author's argument in the given passage? Here the right answer is going to be D.
In certain cultures, such as the developing country Ghana, nepotism is considered to be a heinous crime. तो अगर ये चीज सही है तो कहीं ना कहीं ऑथर का जो पॉइंट है वो वीक हो रहा है। यहाँ पे ये बताया गया ना कि नेपोटिज्म को एक हीनियस क्राइम माना जाता है। तो अगर ये चीज सही है किसी भी कंटेक्स्ट में तो इट इज अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर इन द पैसेज, क्योंकि ऑथर ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म है, सब अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, कोई नॉर्मल इंसान कभी टॉप पे नहीं पहुंच पाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best represents the main point of the given passage? Main point of the given passage. The right answer is going to be, in India, politics is a family business. We'll have to see other options as well, because B is not a very strong option. Across India, nepotism is a way of life. Relevant है C, discrimination can have advantages and disadvantages. नहीं, C तो नहीं हो पाएगा यहाँ। D, corruption is the abuse of power for private gain. Again, not really the thing which we are looking for. Main point यहाँ पे क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है। No, B is not going to be the right answer here. The right answer here is going to be A, which says across India, nepotism is a way of life. Because हम सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सिनेमा की बात हुई, बिजनेस की बात हुई, पॉलिटिक्स की बात हुई, सारे सेक्टर्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में, इंडिया जैसे देश में, नेपोटिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। सो इट इज अ मेन पॉइंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not weaken the conclusion that the Indian is less an individual and more the mascot of his family background? Here the right answer is going to be D. Too many kids feel that they deserve the business when their parents retire or die. So it is not weakening the conclusion. It basically complements the conclusion कि हाँ ये चीजें यहाँ पे होती हैं, इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी यहाँ मैटर नहीं करती, वो बेसिकली अपने फैमिली बैकग्राउंड के मैस्कॉट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following behaviors is unlike what the author describes? Here the right answer is going to be C. There are thousands of middle class Indian students who study in foreign universities on the gift money of their Indian parents. So it is something, it is a behavior which is unlike what the author described in the passage. Next question, if the statements in the given passage are true, then which of the following would also be true? Here the right answer is going to be B. In natural science, neo-Darwinian scholars agree that nepotism does not exist. A queen bee, for example, selects individual workers to stay inside or outside the queen's cell based on their skill and perseverance. So if everything in the passage is true, this option is also going to be true. So this marks the end of the passage and end of the set of questions that we had for today. I hope you guys understood the passage, you were able to properly analyze it, and based on that you were able to solve the questions as well. So I'll conclude on this note. Thank you so much for watching. Keep on all the videos which we regularly post on our CLAT Gurukul official YouTube video channel. Okay. Till then, thank you so much. Take very good care of yourself. Thank you.